साद्वतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। आप सभी का स्वागत है। We welcome all of you to today's session on Srimad Bhagavad Gita. We are studying chapter 2 verse 53 onwards. जिसमें भगवान ने कहा in the previous verse जब आपकी बुद्धि we studied इस मोहरूपी दलदल से पार हो जाएगी that when तो आपको जो सुना है और जो सुनोगे when your intellect crosses over the mire of delusion, you will become indifferent to the temporal pleasures expounded in the Vedas that you have previously heard of and those that you have yet to hear about. So here he is explaining how your intelligence will become stable, your buddhi will become stable. किसी भी मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए it is very important for the buddhi to become stable, to get success on any path. यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि।
तुम्हारी बुद्धि Translation: when your intellect, which has been confused by conflicting scriptural and worldly opinions, becomes unoscillating and thus immovably fixed in transcognitive awareness of Parameshwar, then you will attain the state of yoga. तो पहले भगवान ने कहा था योगस्थ कुरु कर्म। So earlier Bhagavan had told Yogastha Kuru Karmani कि योग में स्थित होकर आप कर्म that perform karma being situated in yoga. कब होगी जब आपकी बुद्धि So when will you become situated in yoga? When your buddhi, intelligence will become stable. क्या चीज लाती है? And what makes the buddhi unstable? हमारी विशेष प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं। Our various material desires, they destabilize our intelligence. And from where do these material desires arise? They arise by seeing and hearing. हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, Hearing includes seeing also. So whatever material desires we have, if we analyze our own mind and whatever desires are lying in our mind for any object, those desires we have acquired those desires by hearing about them or seeing them. And when we hear about many things which are conflicting, which are opposite to each other or contradictory, and our intelligence is not stable, then we find ourselves unable to decide what is right and what is wrong. क्योंकि बुद्धि का कार्य होता है, Because the function of intelligence हमें विवेक देना, is to give us discriminatory wisdom, कि क्या ठीक to tell us what is right and what is wrong. लेकिन अगर वो बुद्धि ही मोह के दलदल में But if that intelligence itself is stuck in the mire of delusion, then it cannot decide properly. Like if there is any person who consumes a lot of intoxicants, बुद्धि कार्य नहीं करती है, then his intelligence will not function properly. निर्णय नहीं दे सकता है। It cannot help us in proper decision making. So similarly, our intelligence is not just deluded by intoxicants, it is deluded by hearing also. We hear various philosophies, we hear various points of view, which are all different. हमारी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। They are opposing to each other. So because of this, we fall into delusion. So for that reason, Bhagavan is speaking Shruti Vipratipanna here. शब्द आता है, This word संस्कृत में comes from pad dhatu, pad gato. Pad means feet, and we walk on our feet. मतलब होता है चलना। So actually pad means to walk, gati. उनसे हम गति करते हैं। और पन्ना का मतलब होता है कि आप कहीं पहुंच गए। Panna means to have to reach somewhere. और प्रतिपन्ना का मतलब And pratipanna means विषय की तरफ जाना। to move towards some object. वी का मतलब होता है And V means in the opposite direction. दोनों उपसर्ग यहाँ पर लगाए गए। So here two upsargas are used, V and Prati. भ्रम में पड़ जाना। It means to fall in a state of doubt. Delusion means unable to decide what the object actually is. आप लगता है पेड़ है आदमी है। Like in the evening time, in the darkness, if you see a tree, then you may get confused it's a tree or a human being. भ्रम में हमेशा दो विकल्प रहते हैं। So when we are in Brahma or illusion, then we find ourselves unable to decide what the object actually is. Is it a tree? Is it the trunk of a tree or it's a person? हमारी बुद्धि जो है वो विप्रतिपन्न हो जाती है। So if we hear conflicting philosophies like this, then we become doubtful. कोई विद्यार्थी है तो उसके माँ बाप कहते हैं आप इंजीनियर बनो। If there is a student and his parents say you become engineer, friends say become doctor, somebody says go into the field of information technology, somebody says become a musician. So in this way, his intelligence becomes confused. Somebody is telling do business, somebody is saying do a job. Why do you get employed by somebody else? Become self-employed. एक विषय को पढ़ना आरंभ करेगा। कुछ लोग हैं ऐसे So people hear many things and get confused. They start reading something, then they leave it, then again start reading something else, then again leave that. In this way,
keep reading various things and become confused. आध्यात्मिक मार्ग में आओ तो यहाँ भी इसी तरह से है। In the spiritual path also, here same thing happens. There are Dvaita Siddhanta, Advaita Siddhanta. Dvaita Siddhantavadis say that Advaita is wrong, Advaitavadis say Dvaita is wrong. Then there is Shaiva, there is Vaishnava, Ganapatya, Shaktya, or फिर कोई Tantra. नहीं, सब एक ही है। Then some people say no, all are one. शास्त्र को मानना चाहिए, कहते हैं शास्त्र वास्त्र Some say follow Shastra, some say don't follow Shastra. मत पढ़ो, भगवान तो सबके लिए खुला हुआ है। Bhagwan is available for everyone. Why do you have to study Shastra? This is just stories of written by Pandits. बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं। Many people speak like और this. फिर आ भी जाओ किसी मार्ग में तो आपको ब्रह्मचारी रहना के गृहस्थ। And if you come on some path, then you get confused whether you should be in the brahmachari ashram or the grihastha ashram. Should we live in the temple ashram or do a job? And those who are staying in ashram, they complain where we have got stuck. We are not getting proper food also. In home we get good food. तो और फिर अगर वहां भी स्थिर हो जाओ तो ये जाता है। And if you get situated there also, then you get confused. What is the position of the Jiva? Jiva is Vibhu or Anu? What is the real Siddhanta? Is it Parakiya or Swakiya? So all this confusion is Vipratipatti. So we also means Vikalpa, options. So there are many options and intelligence remain confused in them. Which is the correct option? So intelligence has to become stable. Only then will you achieve Samadhi. Samadhi means the mind intelligence is stable. Bhagavan is also called Samadhi. So as long as our intelligence keeps wandering here and there, then Samadhi is not possible because we are not fixed up. And why we are not fixed up? Because we hear from multiple sources. And nowadays especially, because now there is so much technology medium available for hearing. Earlier you had to go to the Guru, you had to sit here and wait patiently. When Guru will teach, then only you hear. But now 24/7 technology is available. If you have mobile and internet, then you can hear anything and everything. So this is also a net. और ये इंटरनेट है, ये and this is the internet. अंतर माने जो अंदर रहता है, एक आउटर नेट होता है, it is inner net. It is one is outer net and one is the inner net. So this internet is the inner net, is the net within our intelligence. Generally net is outside, net is used to catch fish, to catch birds, but this net is inside. The net of internet is inside us. संस्कृत में इसको बोलते हैं अंतर्जाल. In Sanskrit this is called antarjal. Jal means net and antar means inside. So then intelligence keeps wandering here and there. This person said this, that person said that. Then we have our own philosophy, because if we have internet, then we are our own guru also, and we can also present our philosophy. So with this, in this way, it is not possible to achieve yoga, to be situated in yoga. Then we do not, our mind cannot achieve a state of equilibrium. We will always remain in raga dvesh. The path that we follow, we will have attachment for that. And those paths which do not match with ours, then we have dvesh or hatred for that. Like we have seen, Vaishnavas do not agree with the Shaivas, Shaivas do not agree with the Vaishnavas, Dvaitavadis do not agree with Advaitavadis, Agrevadis do not agree with Dvaitavadis. So all this goes on. So Bhagavan is telling, rise above all this confusion, get out of all this confusion. Like Bhagavan had told in the previous verse also.
कि जब आप इससे आपका निर्वेद हो जाएगा, that when your intellect crosses over the mire of delusion, में आ गया है then you will become indifferent to all these, इसमें कोई all मतलब this. नहीं है कि दूसरे लोग की कहाँ पे You will not bother about what other people are interested in or where their faith lies. You have understood आप उस पर चलेंगे। what is correct and you just walk on that ये path. बुद्धि आपकी निश्चल नहीं होगी, So unless your intelligence becomes फिर fixed आपकी up, साधना becomes में stable, स्थिरता नहीं आएगी। you will not become stable in your तो यहाँ sadhana. समाधि दोनों So प्रकार से here लिया जा सकता है। the word समाधि का samadhi मतलब can be taken in both समाधि के लिए जो ways, साधना आप कर रहे हैं उसमें स्थित for रहें, the sadhana that you are समाधि doing for करें। samadhi and the samadhi itself, जब both. तक वो स्थिति नहीं होगी तब तक आपकी And बुद्धि जो unless you है achieve वो stable स्थिर रहेगी। स्थिर stability, मतलब उसमें कंपन होता रहेगा, unless you achieve that जैसे state, पेंडुलम। your intelligence will keep shaking like a pendulum. उससे It फिर will क्या keep होगा wavering here and कि there. आप So then what will गंतव्य happen? पर नहीं पहुंचेंगे। You वो will ऐसा ही है not कि be जैसे आप able चल रहे to हैं तो दो achieve कदम your आगे चले, दो destination. कदम पीछे चले, फिर दो कदम It's आगे like चले, you दो कदम move two दाहिने steps चले, forward, then two steps तो आप backward, वहीं then two घूमते steps रहेंगे। on the left, two steps on the right. Then you और basically you किसी तरह remain आप in the जाल same में place, just जाल का मतलब उसी में circling आप around. This फंस is the जाते हैं, net. उसी में Net means the person remains caught तो in that. इससे निकलने के लिए बहुत आवश्यक है So in order to come कि out शंकाओं of का this निवारण net, करना। it is very important to clarify the जैसे अर्जुन की doubts. शंका थी, Like Arjun had a वो doubt. एक He युद्ध के बारे also में उसकी was बुद्धि in the state of भटकी पड़ी confusion. थी ना, कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। He was confused whether he should fight दोनों तरफ or उसके not तर्क fight. थे, And he लेकिन had अर्जुन ये logic करता for both. था कि ये तो मेरे गुरुजन हैं, He was telling that these are my gurujanas, so how can I fight against them? भीष्म और द्रोण को इस संखेचन हरिसूदन मधुसूदन उनको दोनों के साथ में मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, So और how ये सब can मेरे I fight बंधु हैं, against them? They are my इनको करके relatives. मेरे को क्या मिलेगा। What will I achieve बात by कृष्ण killing them? श्याम जनार्दन, क्या आनंद आएगा उसमें। What happiness और shall we दूसरी derive by तरफ killing them? उसको ये भी है कि On the other मेरा जो side, धर्म है he was वो also क्षत्रिय है, thinking तो that इसी my पर dharma is of Kshatriya and I have come इसीलिए here उसकी to शिक्षा हुई fulfill है, उसकी my Kshatriya ट्रेनिंग हुई है, duty. I have been given education इसके and लिए उसको training तैयार in the किया गया dharma of था। Kshatriya. तो बहुत तैयार I किया was गया था prepared उसको for युद्ध that करने से only. पहले। Before 10 साल the उसने war, हिमालय में जाकर Arjun was तपस्या की prepared है, to a great तप करके extent. फिर वो He went to दूसरे Himalaya. He देवताओं met के Lord पास गया। Shiva. तो Shiva ये सब tested उसकी him. तैयारी आज He की went नहीं to है the कि Swarga. He अभी met the यहाँ तो Devatas, got the युद्ध करेंगे, weapons. So he prepared so much. हंसते हंसते And खेलते now खेलते here on the battlefield, when he has to हार actually गए, perform, घमंडी मेरे he is हाथों telling से that छूट I am गया। not even तो able ऐसा to क्यों हुआ? stand. My bow उसकी is बुद्धि slipping जो है from my hands. वो So why थोड़ी did this happen? कपटीपन। Because his और buddhi, his विवेकीपन होने का intelligence कारण यही था became कि वो ये deluded. निश्चय नहीं करना And the पा reason रहा of था this कि delusion was that he was unable लड़ूं to या ना लड़ूं। decide उसको ये भी whether he नहीं should पता fight or पता था no. उस समय He कि did not कौन सी even इच्छा है। know that what तो is प्रश्न तो better, वही है ना, कौन सा श्रेय है हमारे लिए। because he had asked this question, what is तो supremely वो भी इसी से beneficial डिस्कस for करता गया us. था। So Arjun had तो प्राय also करके fallen in this state of हमारा confusion. जीवन ऐसे ही चलता So है mostly our life continues like this only. कि बाहर जो आदमी स्थिर दिखते हैं अंदर से फिर Whatever भी कांपते when हैं। people appears to be stable externally, फल के internally they आदमी also keep shivering, they also keep पेड़ shaking, के पास में they जाके remain बैठो, confused, but they do not display तो their जीवन में confused state, दुख they do दिखाई not देगा, display their निश्चय की स्थिति nature में। of wavering. But if जैसे कभी you कभी check आपने properly, you will find that they are also ये not पिक्चर stable. देखी होंगी कि Like sometimes देखो if you see some painting, ऐसे ही ऊपर से तो एक if you दिखाई see देगी, थोड़ा ध्यान से देखो तो एक superficially you see सज्जन, one thing, but if you सामने से see देखो तो एक close, युवती दिखाई देगी, उधर से देखो तो एक बुढ़िया दिखाई देगी। then थोड़ा you सा will ध्यान रहे if you from another angle ऐसे you ही may व्यक्ति see को an दूर old से woman, देखो तो बहुत from बढ़िया close सुंदर vision दिखाई you may देगा, see a थोड़ा young ध्यान से woman. देखो, So मतलब similarly, उसके if you try मोटापे to से see a पीछे वाले को person, देखो। you may feel that he is very तो stable, व्यक्ति advanced, मुखौटा पहन but के if you चलता go है, deep within, then you may उनकी find something आस्तिक बुद्धि else, है लेकिन बाहर because that स्थिर person है। is wearing a mask. जो बहुत बड़े बड़े So people are शूरवीर व्यक्ति unstable हैं वो दिखते internally, हैं, but अंदर से externally बहुत they make a कठोर show that they are very stable, they are very fixed बहुत up. पहले मैंने एक There are many संस्मरण people पढ़ा who था, are great warriors, देखा था but पाकिस्तान internally के they are very much afraid. जवाहरलाल नेहरू का लाहौर में एक So earlier I had read परेड से this, निकलना था कार that में, Jawaharlal Nehru, he had to go उसने through a बताया कि parade मैं निकला in the लेकिन car. He अंदर said से that मेरे I को बहुत went, कांप रहा था, but internally I बहुत was डरा हुआ था। shivering. I was very पता much नहीं कौन afraid. कब कहाँ से अटैक
I was not sure who will attack from which side, because in those days the security systems were not so strong. So externally he was showing his smiling face, wavering. Yeah. So internally he was quite afraid, because a lot of fighting was going on at that time. So this happens to people. They show off externally to be very stable and fixed up, but internally they are different. That's why Bhagavan has used two words here, although one was sufficient, but he has used two words, Nischala and Achala. That is to stress that how we should stabilize our intelligence. Or we can see in other ways also, our buddhi has two two types of problems. One is Vikshep and one is Laya. Vikshep means Vikshep means from one topic the buddhi goes to the other topic. That is Vikshep. And Laya means when the buddhi does not function itself, like in the state of deep sleep. That is called Laya. So that is also one type of stability, but here we do not want that type of stability. सोने की अवस्था में हो If a person is sleeping and he has taken a tablet for sleep, good sleep, then his intelligence will not function. Then it will appear to be stable only. So we are not here. Bhagavan is not talking of that type of stability. He is talking of stability in the state of samadhi. इस आदमी ने बहुत ज्यादा मादक द्रव्य का सेवन कर लिया, उसकी If बुद्धि some जो person has consumed lot of intoxicants and his intelligence is sleeping, so that is also stable. There is no instability in that. There is no confusion. In that state, he doesn't even think. Where's the question of thinking whether to do this or that? Like a small child, the child is lying down, then the child's intelligence is not confused. It's stable only. So why do small children appear very beautiful? That is because their intelligence is stable. They do not have material desires. That's why they look very beautiful. But when they grow up and they are full of material desires and they act hypocritically, internally something, externally something, then they do not appear beautiful. But this kind of stability, what we see in the children or in the state of deep sleep, that is tamasic, that is ignorance. Bhagavan is talking of stability in the state of samadhi. That is a stability, samadhi in the state of awareness. So your stability, your being fixed up is not due to being in ignorance, but that is due to being aware, being awake, because you have understood. Now your intelligence has lit up. So this is a state of light. The other one is in the state of darkness. That is delusion. So this kind of stability, when that will happen, then Bhagavan says that you will achieve the state of yoga. At that time, you will be free from any doubts. Doubts create confusion. Doubts make the intelligence unstable. This is what Bhagavan will tell later also, that Sankshayatma Vinashyati. So, in order to remove these doubts, we have to hear carefully. In our Shastras also, many different things are written. In Gita only, if you see, there is talk of Karma Yoga, then he will say Sarva Dharman Parityajya. So then, this also may lead to instability of intelligence, but actually that is not true. Because if you study Vedanta Sutra in the beginning itself, in the first sutras, first four sutras of Vedanta Sutra, which are called Chatushutri, these are most important and they are the essence of Vedanta Sutra. And the fourth one says Tattu Samanvayat. So Shastra has only one purpose. Shastra is harmonized in one way only. Whatever different things are told in different places, they are told for people of different eligibility, different qualification, because every person does not have the same medicine or the same food. उसके अनुसार उसको बोला गया, उसको अधिकारी बोलते हैं, अधिकार भेद.
So this is called Adhikar Bhed, means different instructions for people of different qualification, but their ultimate purpose is same only. Like different rivers flowing from different directions ultimately end up in the same ocean. So similarly, the different paths that Shastra is prescribing, they all ultimately reach the same goal only, उसी के लिए वेदांत में सूत्र if you बनाए गए हैं understand them पूरी properly. प्रक्रिया। That's why सबका In समन्वय, Vedanta there is जैसे a गीता में sutra भगवान Tattu कहते हैं Samanvayat. सर्वैश्य So they all have सर्वभूतेषु सर्वत्र। Samanvay. Like in Gita इसमें भी also वेद, Bhagavan says वेद का मतलब केवल वेद that ही नहीं, all the उससे different संबंधित Vedas which ग्रंथ are हैं, there, पुराण हैं, not just Ved, इतिहास हैं, Upaved, सब एक Puran, जाने के लिए Itihas, तो एक ही etc. तत्व है। They all are ultimately तत्वमसि meant to know me तत्त्वमसि only. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। तो तत्व वस्तु एक ही है, So Tattva इसमें Vastu जो is one तत्वज्ञ लोग only, हैं वो not एक ही two. हैं। Ultimately, तो Tattva is वास्तव में जो one. तत्वज्ञ लोग हैं उनका आपस में कोई Actual भेदभाव नहीं Tattvagya, है। actual knower of Shastras are all यदि fixed वो upon समझते same हैं common one point. कि They एक do ही not have तत्व any है, fight among तो themselves. They क्या all होगा, understand कलयुग that Tattva is one only. Shastra is just presenting उसका different dimensions or different ट्रांसफॉर्मेशन की perspectives of the same चेतना में Tattva. होता है। जो Some ज्यादा those who अनुभवी have व्यक्ति are होते more हैं qualified for karma, they do karma yoga. Those वो who are more हृदय having more योग है, internal vision, introspective, they do jnana और ये yoga. भक्ति योग है। Then there are others who are into तो bhakti yoga. उद्देश्य सबका वहीं पर So लाना है। ultimately, एक ही तत्व जो है all have the हमारे same परमात्मा objective भगवान to राम bring the स्वरूप है, seeker to the same tattva. तो उनमें कोई भेद नहीं है। निराकार और साकार एक Brahma, ही है। Paramatma, and Bhagavan निराकार are देखने के different लिए जो shabdas, स्थूल but है tattva is one only. देखते हैं, लेकिन सूर्य Nirakar की and किरणें Sakar is भी also for निराकार one हैं, tattva only. तो हैं तो सूर्य की किरण ही है। Sun is one only. Whether you talk about तो sun rays इसलिए or दोनों में sun, आपस it's में एक ultimately होता sun है, और only. अगर वो So that's why ultimately टूटे the खंडित real होते knowers हैं of तो वो Shastra do हमारे not जैसे have लोगों any के लिए करते fights. हैं ताकि हमारी बुद्धि And मौलिक if रहे, they are हम स्थिर रहें। doing some debates or इसलिए some उनको vad, बोलना they पड़ता do है, it so जैसे that हम we understand things properly. नहीं तो आम For व्यक्ति क्या us, होगा कि वो कभी इसको otherwise the पकड़ेगा, common कभी उसको man पकड़ेगा, तो कोई sometimes he गति will नहीं है। hold on to इसलिए this or सबको hold on to that, पकड़ाना and he'll पड़ता keep है remaining confused. कि इसको So in करो, order to इसको make the मत common करो, man fixed और उसको upon one देखकर path, उसको बोला जाता है they कि इसको मत करो, इसको करो। they present तो जो refutations of other आचार्य philosophies लोग हैं, जो so that भगवान the के common शिष्य man हैं, can remain fixed upon one अनुभवी path. व्यक्ति हैं, But the real वो इस knowers चीज of को जानते Shastras, हैं the Acharyas, they कि उनका understand कोई that राग actually द्वेष Tattva is one संबंध ही नहीं only. है। So there is no भगवान भी कहते possibility हैं of कि any आप एक raga स्नान dvesh करो, in them towards any other philosophy. मेरी एक स्नान करो। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर नहीं तो तुम कभी इसकी पूजा करोगे, कभी उसकी पूजा करोगे, So Bhagavan is telling just worship me, फिर worship आपका one. मन Otherwise, कहीं नहीं you will लगेगा। end up doing puja of this deity, इसलिए that वो deity, so भगवान many. यहाँ भगवान कर रहे हैं, So Bhagavan is explaining that only here, बुद्धि आपकी स्थिर that होगी your और intelligence तब will आप become stable, and अपने then उद्देश्य पर पहुंचेंगे, you संसाधित will होकर achieve your, आपकी समाधि you will लगेगी। reach your समाधि का destination, मतलब and यही you है will be in कि the state सम्यक of आधाते samadhi. मन अस्मिनिति समाधि, जिसमें आपका मन, आपकी बुद्धि So सम्यक samadhi रूप से means that state where सही your रूप से mind, your लग जाए, buddhi उसको remains fixed अस्मिनिति up, समाधि। remains stable, does not waver नहीं तो from फिर there. व्युत्थान रहता है, विक्षेप रहता है। Otherwise, there will be vikshep, vyuthan. फिर इसके सुनने के बाद में Then, अर्जुन after प्रश्न करते हैं। hearing this, Arjun तो asks अर्जुन का question. प्रश्न पहले आया था, कार्पण्य So दोषो Arjun had स्वभाव asked question विद्वान earlier also. समूढ़ चेता, Earlier यच्चते he had शास्त्रम asked. स्थितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। उसका उत्तर भगवान ने दिया यहाँ तक Till 11वें here, श्लोक से। Bhagavan answered that question of Arjun, which he 53वें had asked श्लोक में earlier. Karpanya dosho pahatasu. भगवान बोले, तो करीब 43 श्लोक भगवान ने बोले, जिसमें उन्होंने So Bhagavan spoke around 43 ज्ञान योग और verses कर्म योग दो का वर्णन किया। answering जैसा Arjun's तेन तथा question. सांख्य बुद्धि योगे त्रिमाम शृणु। So he has explained सांख्य Karma योग और Yoga, ज्ञान योग, Jnana Yoga, योग Sankhya Yoga कहते or हैं Jnana दो Yoga, दो and चीजों then को, Yoga also means Karma और Yoga. इसमें He उन्होंने explained वास्तव में both. अर्जुन के प्रश्न का And in उत्तर this, दे दिया, actually, he has given और यहाँ तक the कह दिया answer कि to Arjuna's question. समाधि में बैठे। He has तो also told अर्जुन Arjun to अब become तक जो situated पूछ in the रहा था state of वो Samadhi. विप्रतिपन्न So, बुद्धि से पूछ रहा था, जो whatever संसार Arjun में was बैठे थे। asking till now, he was अब वो asking that वास्तविक out of जिज्ञासा the कर रहा state है। of पहले तो confusion. उसकी अपनी समस्या Now, थी, whatever he उसको will ask, that उसने will हल be the किया। real inquiry. अब जो उसका Earlier, what प्रश्न है Arjun was asking, that वो was his वास्तव में एक personal state of जिज्ञासा की तरह से confusion. प्रश्न कर रहा
not as an inquisitive seeker, आध्यात्मिक but now मार्ग what पे he जो will आते ask हैं will be proper वहाँ तो जाते हैं, inquiry. लेकिन पहले वो So अपनी many people समस्याओं का come on the समाधान ढूंढते हैं। spiritual path, but initially वास्तव में उनकी they spend जो time seeking solutions आध्यात्मिक to मार्ग से their जो own personal जिज्ञासा है problems. वो होती नहीं है। Initially they do not have proper पहले उनकी inquiry अपनी on the अपनी spiritual व्यक्तिगत path. समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक Initially they समस्या, spend time व्यक्तिगत समस्या, in solving their मानसिक कुछ स्थिति, or finding out तो solutions to उसी their में लगे personal रहते हैं। problems, family ताकि जब तक problems, वो mental स्पष्ट नहीं होगी problems. तब तक They remain आध्यात्मिक stuck जिज्ञासा in नहीं that होगी। only. Because और until इसी and बीच unless में you वो have अगर वो become प्रश्न fixed up, पूछते भी you रहेंगे तो cannot have वास्तव में proper उनके inquiry प्रश्न on नहीं होते हैं। Shastra. And जैसे even आप if they ask some बार questions बार on प्रश्न पूछे Shastra, जाते हैं, तो they are वास्तव not में उस proper प्रश्न का questions. उत्तर से They are not quality उन्हें कोई मतलब questions. है नहीं। So many times you must have seen वो people एक ask खल कोलाहल जिसको questions. बोलते हैं, So these are जहाँ not पर एक बच्चा proper कहीं जाता है, माँ बाप questions पूछा आपको actually. ये These कैसे are है, ये like क्या वो क्या, तो just उसका childish उत्तर यदि आप inquiry देकर the ना दे पाए children तो make. उसको कोई समस्या Like नहीं है। children ask so many questions. If you answer लेकिन that also वास्तव में okay. If you प्रश्न don't वो answer होता है also, जो it's आपको not a big परेशान deal कर for रहा the होता है। child. But the real उसके question is बाद that which बगैर is आपके कारण continuously देखे troubling you, and उसका without उत्तर getting लेके answer to that, आप your vehicle is जहाँ जिस stuck. स्तर पर बैठे हैं उस And स्तर से if you get ऊंचे जाएं, answer to that तो question, वास्तविक you प्रश्न will होते हैं। rise one level above where तो you are आपको currently ज्यादातर प्रश्न situated. ऐसे ही That those are real पहाड़ की questions. तरह होते हैं। Other questions are mostly just like a तो अब play, just वो like people are जिज्ञासु की having तरह fun प्रश्न by पूछते asking हैं। those questions. So now Arjun will तो ask इसमें वो the कहता है real उत्तम उवाच questions as the स्थितः inquisitive प्रज्ञस्य person. का भाषा Translation. समाधिस्थस्य And केशव Arjuna inquired, O Keshava, स्थितिभिः किं what are the भाष्यते symptoms of a God realized person? भाष्य। Wisdom अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिस faculty is ईश्वर साक्षात्कार firmly प्राप्त fixed व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है and who is और जो established समाधि में स्थित in है, transcognitive उसके awareness. लक्षण क्या होते हैं? How does the स्थिर person बुद्धि of वाला व्यक्ति stable कैसे बोलता intelligence है, speak? कैसे बैठता है How does he sit? और कैसे चलता है? And how does he walk? तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे हैं So अर्जुन in ने। this verse, Arjun has asked 4 पहला प्रश्न questions. है First कि जो question is व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो that चुका the है, person who has उसकी achieved the भाषा क्या state है? of samadhi, what is his भाषा का मतलब speech? यहाँ वो भाषा नहीं है जिसको हम समझते हैं कि हिंदी Here, में बोलता है, speech does not mean the way we तमिल भाषा में understand speech, बोलता like है, speaking, somebody is तमिल speaking हो या in मलयालम English language or Tamil or या Malayalam कन्नड़ में or बोलता है। Kannada language. तो ये Here, भाषा का the मतलब नहीं है। bhasha does भाषा not का mean मतलब है the परिभाषा। popular meaning of bhasha, that is language. Here it does not mean that. Here bhasha means paribhasha. परिभाषा मतलब जिससे किसी चीज को पहचाना जाता है, जिसको Paribhasha लक्षण means बोलते by हैं। which we can understand something. तो हर एक Lakshana, चीज को पहचानने the के लिए symptom. उसका कुछ So लक्षण होता है, for recognizing anything, तो we have उसको to know जानना its आवश्यक है। तो ये symptoms. बहुत ही Where it is very महत्वपूर्ण important प्रश्न to है understand the symptoms. So और this ये is a very आरंभ में ही important question. अर्जुन ने पूछा है। And in the तो beginning यहाँ पर only, लोग जो Arjun has asked गलती this करते हैं question विशेषतः because this हमारे is देश में, where people make lot of क्योंकि mistakes, वो especially in व्यक्ति, our country, because they don't study Gita only. तो पिछले What can be श्लोक done? में भगवान ने समाधि शब्द का In the प्रयोग किया previous है, verse itself, समाधिरोचना Bhagavan had used the word पदायोजो samadhi. निबध्यते, कि उस समाधि में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो योग को प्राप्त That करता है। तो person योग का तो becomes उन्होंने वर्णन fixed कर up दिया, इसलिए अर्जुन in को the कुछ state of पूछने की जरूरत नहीं। samadhi. पूछ रहा है कि So yoga समाधि already has been समाधि explained by की Bhagavan. जो So स्थिति Arjun है, is not जिसमें asking बुद्धि about स्थिर that. हो गई है, Arjun is इसको asking मैं that कैसे if पहचानूं? somebody has become situated in the state of कि हम samadhi, किसी चीज को अगर नहीं जानते हैं how do I तो उसका तो लक्षण recognize? बताना पड़ेगा आपको So if we पहचानने do के लिए। not know something, then we have to जैसे explain its हम यहाँ पर lakshana. हैं और मेरे से मानो कोई मिलने के लिए Like यहाँ if आया I am here and somebody और is मैं coming किसी to को meet कहूँ कि me, भाई तुम and if I tell बाहर गेट पर someone बैठ जाओ, that आए you दोस्त please यहाँ लेकर आना आप, sit outside the नहीं तो बेचारे gate, इधर उधर and भटक रहे हैं, when you see that तो मेरे को person, उसको then लक्षण बताना पड़ेगा। bring him in inside. बहुत So then लोग I आते have हैं to tell आते him हैं some जाते हैं, symptoms तो because कैसे so many पहचानेगा people कि are वो going, कौन है? are walking in front of the तो मैं कहूँ building. कि वो So how आदमी will है, that person तो recognize? आदमी So या if I उसके just मुंह tell में him that he is a human being, व्यक्ति है so या उसके 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो ये तो कोई लक्षण नहीं होना this is not चाहिए। a proper symptom because तो there are so उसका many कुछ human beings विशेष walking there. चिन्ह So मेरे को बताना symptom पड़ेगा means I जिससे have to उसको tell the पहचाना जा special सके। symptom by और which जिस exactly विशेष that person चिन्ह से can be recognized. कोई So वस्तु that special पहचानी जाती है, symptom by which an object is उसको लक्षण recognized, बोलते हैं। that is called लक्ष्यते lakshana. अनेनैति लक्षणम, उसी को भाषा शब्द से किया गया है। So that भाष्यते for that here Bhagavan here Arjun is using the word लक्षणम, bhasha. जिससे उसको भाषित किया जाता है,
by which it is भाषा का मतलब explained. होता है एक माध्यम जिसके Bhasha माध्यम से means हम अपने medium विचार by दूसरे को which प्रकट करते हैं। we तो express उस our वस्तु को thoughts to other समझाने के लिए people. जिस चीज का प्रयोग So किया जाता है वो what is माध्यम है, उसको explained to परिभाषा भी what बोलते is हैं। used to explain that object, that is called तो bhasha or ये बहुत paribhasha. आवश्यक है So this is very क्योंकि हमारे important देश में जो है वो अवतारवाद है, because in our country there is avatarvad, जो एक हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का एक वैशिष्ट है। ये अवतारवाद और कहीं नहीं है। which is a speciality of our dharma, our भगवान culture. का We don't अवतार find anywhere अवतार यहाँ else पर होते that हैं। Bhagavan descends as avatar. गीता में And there भगवान are कहते many हैं नमो avatars. And in बुद्धाय Gita, Bhagavan also says नमामि युगे that युगे I come हर एक in every yuga. तो इसलिए जो आम व्यक्ति जिनकी श्रद्धा That है, so the common शास्त्र person की who has नहीं है, शास्त्र का Shraddha ज्ञान नहीं है, but does no वो knowledge of किसी में Shastra, थोड़ी बहुत कुछ विशेषता देख then करके that उसी को person, when अवतार he मान लेते sees हैं। some speciality in somebody, it starts तो इसलिए भारत में accepting that हमेशा कोई person ना as कोई अवतार avatar. रहता ही है, कोई That's why कलकी का in अवतार है, India always there is some avatar. कोई Somebody is some avatar of अभी Kalki. कोई शिव जी का अवतार था यहाँ पर, तो एक से एक Now किस्म here होगी। there was some Shiva avatar, and चमत्कार की 121 डुबकी people लगाने के लिए सब died दौड़ in रहे थे, stampede. बीच में They केवल were एक से running 21 लोग बच to गए take the dust धर्म of his करने feet, and वाले। इसलिए 121 people died in the stampede. It happened तो कोई recently. कृष्ण का अवतार है, कोई राम So का अवतार somebody है, is कोई avatar बुद्ध of का Krishna, अवतार है, somebody is avatar of कोई राधा Hanuman, रानी का somebody is अवतार avatar है। of Radharani. तो यहाँ अवतारों की व्यक्ति अगर स्वयं भी ना कहे कि Even मैं if the अवतार हूँ, तो person कुछ himself लोग doesn't उसको say his avatar, other people will उसको propagate, अपने आप को accept and propagate him as an avatar. घोषित करते हैं कि मैं Some इसका declare अवतार हूँ। कुछ themselves तो as ये an करते हैं कि avatar, उनके some don't अनुयायी declare, उनको but their followers, छोड़ते नहीं they है, गीता elevate के बगैर their शांति नहीं guru मिलती। to the status of avatar. They cannot live peacefully until and तो unless they इसलिए ये elevate that समझना यहाँ person to पर that state of कि avatar. So that's why समाधि here we have to समाधिस्थ understand कौन है, that who is really the उसका person क्या लक्षण है, situated in the उसके क्या state of गुण धर्म samadhi. है। What are his अगर symptoms? आपको मैं कहूँ कि What आप what are his बढ़िया गाय qualities? खरीद लीजिए, If तो I पहले tell आपको you समझना होगा कि that गाय you buy किसकी है। a nice cow, you have to हमारे first of all शास्त्र में गाय understand what उसको is बोलते हैं, cow. So शासनादि in ग्रंथों our में बहुत पढ़ना, shastra, कि जिसके गले के who is नीचे जो cow? गलरी One बोलते has हैं, the dewlap गलकंबल बोलते हैं, वो लटकता है, उसको गाय hanging, मानते हैं। तो अगर that किसी is को accepted as cow. गोदान करना है, पुण्य So if प्राप्त करना somebody है, तो has वैसी to गाय को ही donate दान cow, करने से then पुण्य मिलेगा। you will कुछ get the ऐसी नहीं है कि punya जर्सी है by उससे आपको donating प्राप्त फल नहीं cow मिलेगा। as defined in Shastra, not by donating jersey क्योंकि cow. शास्त्र के अनुसार अगर आपको फल चाहिए तो If शास्त्र के you want अनुसार the कर्म result करना of पड़ेगा ना। Shastra, then you have to act कहते हैं ना कि according to कलयुग में यज्ञ Shastra. वगैरह का फल नहीं होता, उसका कारण यही है कि Those who say that वो in जो Kali समाधि Yuga there करनी is है, no result of जिस yajna, प्रकार की प्रक्रिया because है, जिस that is प्रकार said के because the मंत्र हैं kind of जिनका उच्चारण ingredients that करना you है, have to उस put in प्रकार the के लोग yajna, the विरल kind लोग of हैं। mantras that you have to हर recite, चीज दूषित हो those गई है, people are very rare. All the जल तक भी ingredients दूषित are हो गए हैं। polluted, even water तो is इसलिए polluted. यज्ञ That की is प्रक्रिया why बहुत कठिन इसलिए है that is कि why बहुत the process of strict है। yajna is very विधि वैसी ही difficult होगी to conduct today कि because it इसका is फल very तो तुरंत strict. होगा, It तभी has होगा, to be नहीं होगा तो performed वो नहीं मिलेगा। as it is थोड़ी सी mentioned जगह in the चलती रहेगी, Shastra. फिर उसमें Otherwise, the apurva will not विशेष be प्रकार के generated. If बदलाव some होंगे, mistake तो उससे फल happens, नहीं मिलेगा। then you will not get तो the इसलिए desired result लक्षण को or the समझना बहुत prescribed जरूरी है, result यहाँ in भी the आध्यात्मिक Shastra. मार्ग में भी। That's why we have to अगर जो understand the सही symptoms वास्तव में properly. गुरु है या If समाधिस्थ somebody is व्यक्ति a है, proper guru or उसको आप नहीं a person पहचानेंगे, किसी situated in गलत state व्यक्ति of को samadhi, समझ लेंगे if you do ऐसा, not तो recognize उससे that वो फल नहीं person मिलने and वाला। you consider ऐसी घटना the बहुत wrong होती है। person as the guru or situated in samadhi, then you will not कभी get the भूल proper भटक result. जाए, If some mistake त्रुटि रह happens, जाए, if तो हो some सकता है कि deficiency आप is भटके। there. तो So इसलिए similarly गीता here also, आरंभ में ही इसको कहा गया है, so in Gita, this has बहुत been told स्पष्ट in रूप से। the beginning only very इसको clearly. जानना पड़ेगा, इसलिए कहा स्थित This has to प्रज्ञस्य be का understood. भाषा। That's why it is सबसे said, पहला Sthita प्रश्न, सबसे Pragyasya पहले ka तो मेरे को bhasha. ये बता First of दीजिए all, you tell कि जो me स्थित प्रज्ञा that the कैसा Sthita होता है। Pragya यानी Vyakti, the जो one who इसकी is बुद्धि situated in स्थिति से Samadhi, स्थिर हो गई है, what जिस are his तत्व को प्राप्त symptoms? कर लिया है, That means I'm उसका asking about लक्षण the क्या है, उसको मैं person whose पहचानूंगा intelligence कैसे? is stable, क्योंकि who बुद्धि is तो यहाँ situated in होती रहती है, Samadhi. How will I recognize that इसकी person? कालत्व Because में इसकी intelligence दाढ़ी cannot ऐसी be है seen इसलिए इसकी externally, बुद्धि होगी that he has बढ़िया। black hair or ऐसा long तो कुछ beard. नहीं है, बुद्धि तो अंदर की बात है, Intelligence is internal उसके stuff. व्यवहार से पता चलेगी। So it can be recognized by his कि बाहर behavior से देख के only. तो कुछ पता नहीं लगेगा।
अब लोग इसी से But कहते by हैं कि ये seeing externally, you 108 can't साल का है। understand anything. 108 Like साल का people होना बहुत say बड़ी बात है। that this sadhu is साधु of को लोग 108 years. ऐसे For a बहुत साधु sadhu, 108 साल के living for 108 years is a साधुओं के great बारे में achievement. बड़ी There are गर्व many वाली sadhus बात है, like जब that. तक वो 70-75 के रहते हैं तब तक उनकी उम्र को कम बताते हैं। For in Sadhu Samaj, it is और जैसे said, वो 70 we पास have करते seen हैं, that 10 when साल they से are और of जोड़ देते 70 हैं। or 75 years, मैं ऐसे ही they कई साधुओं को show जानता हूँ themselves जिनका as कोई young. पूछा But कि when तुम्हें they किसने cross बता that, दिया then they 90 add साल का 10 है? to 12, तो 10, वो 12 कहते कि नहीं years. 101 साल का है। So I have seen तो some, एक for साल some में 11 sadhus, साल बढ़ गए, 1 year back they were telling their फिर age was 110 साल। 90. After 1 year, they are telling it is 101. तो In 1 year, how did जिसकी your उम्र age ज्यादा increase है 11 लोग years? सोचते हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ साधु है। So if somebody is old, हाँ, then ऐसा तो people भगवान think कुछ नहीं that कहेंगे, he is a great realized कोई sadhu. फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव So, गोस्वामी but भी 16 here साल it के ही थे, is all that is not being said. We know कुमार Shukdev थे। Goswami was वैदिक just of चारों 16 पुत्र थे तो years. 5 The साल ही four थे, तो Kumaras, दाढ़ी they वाड़ी are नहीं always थी। of 5 years of age. They do not have any beard or anything. उनका नाम इसलिए कुमार है। Their name itself is Kumar, तो इसलिए इसको means young. समझना है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। इसका So उत्तर that's why here भगवान we बहुत have to understand विस्तार से देंगे, क्योंकि Sthita ये Pragyasya दूसरा का अध्याय जो है भाषा. So 55 श्लोक Bhagavan will से explain this in detail 71वें श्लोक तक इसी प्रश्न का उत्तर भगवान देते रहेंगे। in तीसरे this अध्याय में chapter. आके अर्जुन वही Verse प्रश्न पूछते हैं। 51, 55 to 51 is यहाँ 70, से 55 to आगे तक 71 is answering this करीब question only. Then later again Arjun will ask. 16 के करीब 16-17 श्लोक जो आएंगे वो इसी प्रश्न का उत्तर आएगा। So फिर now ये the तो 16 एक or प्रश्न है। 17 verses will be answering this question only. ये So प्रश्न this है, is one उसकी question. परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या This है। question is फिर for the 3 प्रश्न जो symptoms है of कि that वो person. व्यवहार कैसे करता है, उसके Then लक्षण there are जानने का 3 other बाकी है। questions about his वो तो behavior. आंतरिक Because चीजों को even if you देखेंगे, tell the symptoms उसको of हम that बाहर person, कैसे देखेंगे। how do I स्थित बुद्धि recognize तो those अंदर ही है symptoms ना, externally? तो इसलिए Because पूछा स्थित धी किम stable प्रभाषते, intelligence वो is बोलता inside. कैसे है। So that's why Arjun is बोलने का asking, मतलब how does he व्यवहार speak? कैसे करता है। Speak here, speak refers to behavior. How does he behave? एक तो समाधि की अवस्था होती है कि One आदमी is the ध्यान state लगाने of लगता है, samadhi. The person is sitting in dhyan, व्युत्थान की दशा होती है जब वो and ध्यान other से is बाहर state of आएगा, तो उसमें वो vyuthan. अपना When जो he comes व्यवहार out of करेगा, dhyan, what behavior he will show, how he कैसे will behave, हम पता लगाएंगे। उसकी कोई प्रशंसा how करता है shall we recognize that? If तो कोई somebody is निंदा करता है glorifying that person, if तो somebody क्या is बोलेगा। criticizing that person, then how प्राइमरी does he क्या है, react? उसकी प्रशंसा करो तो बहुत पसंद आ Generally, जाएगा आपको, if और you praise निंदा somebody, करो तो he आपको appreciates परेशान very करेगा। much, and if you इसी को criticize somebody, तो क्या then he ये भी reacts ऐसा ही करता है। violently. So does this person उसकी also react वाणी in the same way? कैसे निकलती है, What kind of words come out ये सबसे of महत्वपूर्ण his है। mouth? This is very important. क्योंकि How does he किसी speak? आदमी का What is his पहली speech? पहचान यही है, उसकी वाणी से Because बोलने से the पता चलता है। first symptom of a person is उसकी when you meet उससे बात somebody, कुछ पता चलता है ना, किस प्रकार से then बात by करता है। talking to him, बाकी उसका you जो पिछला understand व्यवहार है जीवन में, उसको something लेकर about पूछना him. चाहिए। पहले For 6 understanding other महीने things about कुछ his पूछते life, हैं then you have to spend a तो lot of वो time. क्या बोलता But है। initially, when you speak with स्थित him, धी किम what does he प्रभासे, speak? How does he तो speak? किम प्रभासे का मतलब क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और किम आसीत, जब Then वो Arjun अकेला asks Kim रहता है Asit, when he is किस alone, प्रकार से उसका जीवन शैली चलती है। then what lifestyle does he और follow? ये व्यवहार, ये पहला और तीसरा किम रजत है, वो So the चलता first कैसे है, and third, ये है उसके how व्यवहारिक। does he walk? How does he speak? This is आसीत all का in मतलब his है कि जब practical वो life. How does he behave? एकांत में है, Okay, the first and the बोलने third, में how वो he speaks एकांत की and how he स्थिति में है, walks, refer to his तो practical dealing. वो किस But the प्रकार second से one, how does he अपना sit, जीवन यापन करता है, refers to क्या क्या his करता है। lifestyle when he is बैठ के alone, टेलीविजन not with देखता है, others. When he is alone, nobody is watching him. गप्पा हाँकता है, क्या करता है, What is his lifestyle? सोता Is है he watching television? Is he तो just sleeping? भजन करता है। Or he is उसकी जो doing मस्ती है, bhajan? कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि दिन भर भजन Bhajan is करते हैं, all, some people are famous for doing कुछ तो bhajan whole करते day हैं also. वास्तव में, जो So अच्छे they do साधु हैं वो something. दिन भर भजन Good करते हैं। sadhus, दूसरे nice sadhus, they do bhajan whole day. भगवान जाने, लेकिन उनकी भी Others, what प्रसिद्धि they रहती do, है God ऐसे। knows, but they are also famous. किमासीत और व्रजेत किम, तो वो चलता And कैसे the है। third one is, how does he walk? चलने का मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार So करना, walking here refers to his behavior with और other किस प्रकार people. का व्यवहार करता है, क्या कार्यशैली है उसकी।
how does he behave in the society, what is his lifestyle, जाना इधर घूमना फिरना, तो roaming here ये and वो there. समझना चाहता है। तो ये श्लोक This is what बहुत Arjun wants महत्वपूर्ण to है understand. किसी So भी this व्यक्ति verse को is very समझना important to कि क्या recognize a person, to understand a person, to recognize इससे these four हमें things. पता चलेगा कि इस With this, व्यक्ति we की will बुद्धि understand कितनी स्थिर है, how much stable इसकी this क्या स्थिति person's है। intelligence is, what is तो ये एक पैमाना what is his reality. भगवान यहाँ बताएंगे, बड़े So विस्तार Bhagavan से will बताएंगे, explain in detail. लेकिन ये प्रश्न जो है But वो this हर एक question साधक को समझना चाहिए। इस प्रश्न should be understood properly by every प्राय करके sadhak, यहाँ पर गलती हो जाती है। every जो लोग spiritualist, because नए generally साधक हैं उनको इसका spiritualists, ज्ञान the नहीं है, sadhakas, the new तो sadhakas, वो they do सिर्फ not have प्रभावित हो knowledge of जाते all हैं, this, and दूसरों then की they बात get सुनकर impressed प्रभावित हो just जाते हैं, by hearing what others उस व्यक्ति say. की बात सुनकर भी प्रभावित हो जाते हैं, और फिर या तो वो उसी में ही पड़े रहते हैं, उससे So निकल नहीं either पाते फिर, they क्योंकि remain उनको ऐसा अवसर ही नहीं in मिलता that किसी से only, सुनने का। they do not get और अगर proper opportunity to उनको समझ hear, आ जाती है and even if they तो उसका understand, सही व्यक्ति ढूंढना then you have और to उसको find छोड़ना the right person एक again and समस्या की leave the बात है। previous authority. Then it is very इसलिए difficult हमारे for him शास्त्र में to do all इस this. चीज का वर्णन मिलता है That's why in our Shastras, कि this description is एक given गुरु के क्या लक्षण हैं, कैसा that होना what are चाहिए, the symptoms of Guru, और how should the क्या Guru be, कार्यशैली, what should be his क्या उसका lifestyle, उत्तरदायित्व है, what कैसा is, व्यवहार है, is his कैसे गुण responsibility, होने चाहिए। how he should behave, तो what ये qualities he कोई should भी इसमें have. बाहरी चीज नहीं है। So there is हालांकि जो nothing प्रश्न है external in this. Although वो the बाहरी question दिखते हैं कि is बैठने का मतलब क्या, question seems कैसे to be very मतलब external, पद्मासन में but बैठता है कि here सिद्धासन में when बैठता है, Arjun is asking how does he एकदम sit, it does not चलने का refer मतलब to ऐसा नहीं है कि sitting in बेग लेके Padmasan or some चलेगा, other पैदल asan. चलता है, Walking does not mean at इससे what कोई speed does he प्रेक्षक नहीं walk. है यहाँ पर। It is not प्रेक्षक that जैसे has no पीछे relation होते with the हैं, Guru. Whether he इसकी speaks आवाज ऊंची loudly निकल or रही है, soft or इससे softly, कोई मतलब नहीं है। we have nothing to do with all that. Arjun इसका is not अर्थ talking about जो all है that. उसके व्यवहार से है, क्योंकि हमारे दो प्रकार The के लक्षण होते हैं किसी here चीज the को meaning समझने के is लिए। related to his एक behavior. स्वरूप For लक्षण होता है, understanding तटस्थ anything, लक्षण। we have two lakshanas, Swarup Lakshan and स्वरूप लक्षण Tatastha होता है Lakshan. कि उसका Swarup स्वरूप क्या Lakshan है, means मतलब वो वस्तु it दिखती refers कैसी to है, what is its Swarupa, how does it अगर look. उसका शरीर है तो वो कैसा है, If it is the question is तो about उसको his बोलते हैं body, स्वरूप how does लक्षण। the body look? That is और Swarup दूसरा Lakshan. होता है तटस्थ And the लक्षण। other is called Tatastha Lakshan. तटस्थ लक्षण का मतलब है कि Tatastha उसकी जो Lakshan अपनी means एक कृति है, जो कार्यशैली है, या that उसकी जो whatever that how that object गुण है functions वो or the बाहर कैसे qualities प्रकट होते हैं, it has, how do they तो appear उसको बोलते हैं externally. तटस्थ लक्षण। That is called जैसे Tatastha मानो Lakshan. कोई व्यक्ति जो है चित्रकार है, Like suppose a person, तो there is a उसका स्वरूप painter. लक्षण तो ये है कि So भाई what वो is his कैसा Swarupa दिखता है, Lakshan? His Swarupa Lakshan is how he appears. पुरुष है कि स्त्री है, कितना Is लंबा a है, male, कैसा female, उसका कलर है, tall, रंग short, है, the कैसे बाल complexion, हैं, कैसी आंखें हैं, style of तो ये hair, हुआ उसका color स्वरूप of लक्षण। eyes. This is his देखकर Swarupa आप समझ Lakshan. सकते हैं। By seeing him, you recognize him. और उसका तटस्थ लक्षण यह है कि वो And जो what is his पेंटिंग करता Tatastha है, Lakshan? Tatastha Lakshan is चित्रकला related to करता है, his painting. What तो type of उसका अपना painting he एक makes. स्टाइल है, एक शैली है, So what जिससे is वो his बनाता है, style of painting? तो उससे उसकी पहचान होती है। By that he is जैसे recognized. किसी की आप चित्रकारी देखें और आपको मालूम है कि इस तरह के चित्र बनाता, Like तो if you चित्र see देख some कर भी आप painting, बता सकते हैं by seeing the कि painting कौन also सा you can चित्र है, say उसका बनाया that हुआ this चित्र है। painting is drawn by या आपको particular अगर painter. चित्रों का ज्ञान है, Or पेंटिंग का, if तो आप बता you सकते yourself हैं कि have कौन सी knowledge of शैली में चित्र paintings, बनाया by गया है, seeing the painting you बड़े can अच्छे say चित्रकार that हैं what style इनके, of painting is that, to which तो tradition it ये उसका belongs, होता है and तटस्थ is लक्षण। has that painting been done nicely तटस्थ or no. लक्षण जो है वो So that स्वरूप is से this is बाहर Tatastha रहता है, Lakshan. Tatastha Lakshan यानी remains कि जो outside of उसके स्वरूप से Swarupa. बाहर जो प्रकट होता है Means what is उसको तटस्थ appearing लक्षण बोलते हैं, outside his Swarup. और जो स्वरूप में स्थित रहता है उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। तो किसी भी And what is चीज की situated in the पहचान Swarup, दो that से is called होती है, Swarupa Lakshan. और इन दो में जो है जो दूसरा वाला है So तटस्थ anything लक्षण, is, if has ये to be बहुत it has to be महत्वपूर्ण है, recognized, it is recognized by these two Lakshans. क्योंकि स्वरूप लक्षण And the Swarup पहली बात Lakshan तो is आपको उस व्यक्ति extremely के पास important ही जाकर because देखना for पड़ेगा, Swarup Lakshan you have to meet और that दूसरा person and see him, स्वरूप से कुछ ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा। and
you will not know more than जब भी किसी the को कहें Swarup. कि ये बहुत बड़ा आदमी है, When we बहुत say विद्वान that व्यक्ति this है, person is very तो intelligent उसका or a स्वरूप से great देखकर तो person, पता नहीं चलता we कि have not understood वो that बहुत by बड़ा his Swarup. धनी है या दानी है If या somebody is very rich, very intelligent, बड़ा संगीतज्ञ very है, charitable, तो उसको great देखने से पता, musician, स्वरूप से by थोड़े पता seeing that चलता है, person by his Swarup, we don't लेकिन understand that. उसका जो गुण बाहर प्रकट होता है But how उससे his पता चलता है। qualities are manifesting तो इसलिए externally, शास्त्र में by भी that we जब understand. भगवान So का that is वर्णन why होता in है Shastra तो also, सबसे when पहले उसके Bhagavan is तटस्थ described, लक्षण ही बताते first हैं। of all his Tatastha Lakshan is described. वेदांत सूत्र पढ़ें या If you भाष्य, study Vedanta तो जो पहले Sutra or श्लोक Srimad Bhagavatam's जन्माद्यस्य first यतः, verse, so when it is said तो Janmadhyasya उसका Yatah, तटस्थ लक्षण है this is कि the उनसे Tatastha ये Lakshan of संसार Bhagavan, प्रकट हुआ that है, वो from सच बात है। Bhagavan this world तो इससे appears. हमको He उनकी is महिमा का maintaining पता this world. चलता है। So उनके by this स्वरूप we से तो हमारे understand the सामने greatness अभी of उपलब्ध Bhagavan. नहीं है, Because by Swarupa, देख Bhagavan नहीं is not सकते हैं, standing in front of तो us. We उसके cannot बारे में see हमें him. ज्ञान कैसे होगा? So how will we get knowledge about कोई him? व्यक्ति यहाँ पर हमारे सामने प्रकट नहीं है, The और person अगर who is प्रकट not भी है appearing in front तो of हमारे अंदर us, and even सामर्थ्य if he नहीं है appears, देखने we की, do not have the तो उनका qualification to अगर see हमें ज्ञान him. करना है If तो we have आवश्यक to है तो know कैसे about करेंगे? him and it is तो इसलिए important, तटस्थ then लक्षण how है shall we understand? कि So ये for वो that व्यक्ति है reason, जिन्होंने Tatastha इस Lakshan जगत को is बनाया। described, तो इस that this is संसार the की रचना से person आप उनको who समझ सकते created हैं। this world. So by his और creation, we can तटस्थ और understand स्वरूप him. लक्षण में दूसरा भेद ये है कि जो And स्वरूप another लक्षण है difference वो between हमेशा Tatastha रहता and है, Swarup Lakshan is that क्योंकि Swarup वो तो Lakshan उनका is स्वरूप ही है। permanent, because that is the अगर वो स्वरूप Swarup. लक्षण ही खत्म हो गया तो व्यक्ति खत्म If हो जाएगा। Swarup Lakshan is और destroyed, then the तटस्थ person जो है himself वो is हमेशा destroyed. नहीं रहता, But Tatastha Lakshan does not क्योंकि appear जो all the time, संगीतज्ञ हैं वो हमेशा तो संगीत नहीं गाते, because the musicians all the time they do not sing music. भगवान क्रिएशन भी करते हैं तो हमेशा Even तो if नहीं Bhagavan is दिया है, doing the creation, he is इसकी not तुलना नहीं creating होती। all the time. He has created, now it will be maintained, then it will be destroyed. तो इसलिए तटस्थ वो So that is why हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, कभी होता है Tatastha कभी is नहीं not होता। available all the time. लेकिन Sometimes it is there, आरंभ sometimes में it is तटस्थ not there. लक्षण से हमको But in the सहायता मिलती beginning, है उसको we पहचानने के लिए, और Tatastha तटस्थ Lakshan से ही helps us in स्वरूप का पता recognizing चलता that है। person. फिर And from Tatastha Lakshan only we अगर reach the किसी कोई Swarup बहुत Lakshan of प्रसिद्ध that व्यक्ति है तो person. पहले उसके If बारे there में is सुनते some हैं, very famous person, first of all we hear about him. पिक्चर वगैरह मूवी वीडियो देख सकते Nowadays हैं, we can पुराने see his videos, जमाने में movies, तो etc. But in the केवल olden सुनते days, थे, we कुछ लोग होते थे just जो heard about नाम those मात्र people. उनका ठीक है, That's why the भगवान gopis का also नाम सुना, say उन्होंने देखा भी that नहीं, उसी से उनकी प्रीति होगी, we heard the name of इसलिए Bhagavan. By रुक्मिणी देवी hearing ने the जब name, भगवान को देखा uh, नहीं था they तो got बारे में preeti for सुना ही था, Bhagavan. Shri Rukmini Devi, सुनकर she ही had तुरंत just heard उन्होंने about Bhagavan, and by hearing she got prema प्रेम for पत्र Bhagavan, भेजा and then ब्राह्मण she के हाथ sent a में love letter to कि Bhagavan हमको ले through the जाके Brahman. लेकर आए। तो वो सुनना जो है वो उनका तटस्थ लक्षण ही उन्होंने सुन रहे हैं So किस प्रकार का when वो she है, heard about Bhagavan, she क्या obviously heard about the Tatastha Lakshan, about तो his इससे character, पहचाना। qualities, etc. So this तो is how we recognize भगवान person. जो है अब इन 4 प्रश्नों का So उत्तर now देंगे, henceforward Bhagavan will give answers to 14 और these 4 17 श्लोक questions में of Arjun, and इसके बारे में and then बोलेंगे later in कि 50 कैसे verse बोलता 56 and है। 58 से 57 Bhagavan will तिरसठवें explain श्लोक तक about वो such कैसे person, बैठता है, और how 64 he से speaks, 71वें श्लोक तक 58 to वो कैसे 58 to चलता है, 63 how he sits, and 64 सब to का वर्णन 71 how he walks. किया जाएगा। All this will be described in the upcoming verses by Bhagavan. प्रवचन से सुनेंगे। So from next class onwards we will hear Bhagavan's answer. If anybody has any question, you can ask. बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत गंभीर और गहरा विषय पे So प्रवचन question, होगा। what you spoke was very deep जैसे subject कहावत matter. है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, So generally it is पहचान जौहरी ही कर सकता है। हाँ जी, generally it is said तो that a diamond can only be recognized by a मैं श्री qualified गुरुदर्शन में jeweler. भी पढ़ रहा था So I was कि studying in बहुत Sri सारे Guru Darshanam व्यक्ति that योग्य many या people, जो क्वालिटीज़ यहाँ इस श्लोक में 54 नंबर में भगवान बता रहे हैं, स्थिति, whatever qualities Bhagavan is explaining in तो verse 44, ऐसे मतलब योग्य गुरु के पास पहुँच भी जाते हैं,
लेकिन Many जैसे people आपने they प्रवचन के शुरू में बोला कि अपनी attain a शरीर और qualified guru also, दूसरी but समस्याएं as you जो होती हैं said, समाज जो people घर have की various समस्याएं होती हैं problems in personal उसके life, साथ family पहुंचते life, हैं, तो योग्य etc. गुरु के पास तब They reach पहुंचते a हैं। qualified guru with all these तो problems. Although they have reached a qualified एक guru, they have ये भी attained आता है him, कि but ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव। तो यहाँ पे so ये like किस in तरह से Chaitanya वो Charitamrita प्रैक्टिकल also बात it है is said, या फिर Brahmanda उसमें Brahmite kuno bhagyavan jiv. ऐसे लोग कैसे So पहुंच जाते हैं और how do these क्या people होता है? reach a qualified guru and how can they वो remain तो खैर fixed up in his भगवान की seva? कृपा से होता है। So answer, that actually मैं happens by कह Bhagwan's रहे हैं mercy भगवान का only, आपके ऊपर getting कृपा a हो qualified जाए, guru. अगर आपको But कृपा here हो तो Bhagwan फिर is करना भी तो telling आना चाहिए ना। that you तो may आपको get, उन्होंने Bhagwan कृपा may give करके you ऐसे his व्यक्ति के पास mercy भेज दिया and take you to तो a आप qualified guru. उसको पहचान ना But पाए, you should also have the मिले नहीं तो आपको qualification लाभ to नहीं होगा। recognize that person. Because if you cannot recognize him and walk away, तो then how would you get भगवान की benefited? कृपा तो है ही, So Bhagwan's वो तो mercy is हमारा obviously there, and that is not हिस्सा नहीं है। in जो our चीज़ हम control. चाहते हैं कि उनकी कृपा That is होगी his होगी, own नहीं wish. होगी नहीं होगी, Whenever he wishes, he will give लेकिन his mercy. हमारा क्या कर्तव्य है But उसको what is बताया। our duty? ये भी Bhagwan उनकी is कृपा है। explaining that. That is also one तो mercy only फर्क by नहीं है कि Bhagwan. उन्होंने आपको Bhagwan's किसके पास mercy is भेज दिया, not लेकिन just that he is हमको taking you बस to a है कि जैसे qualified अर्जुन guru, को वो but गीता also उपदेश that दे how रही we है, वो have to कृपा है। behave. Like Bhagwan is giving गीता भी instructions to Arjun in Bhagavad Gita, so that is also his mercy. Arjun says also प्रसादात्मया, तो आपके प्रसाद से that by your prasad, by your mercy, my delusion has been destroyed, my moha is लेकिन भगवान destroyed. So prasad इसलिए भी means तो kripa, उनको भी mercy. तो कह रहे हैं कि आपका कर्तव्य है, आप But, कीजिए। but Bhagwan is instructing him also that this is your उनको duty. कृपा तो उपलब्ध हो ही रही है Bhagwan's वर्तमान में, mercy is there लेकिन हमारा everywhere by कर्तव्य the जैसे ही medium of उसके बाद Bhagavad उसको Gita. But what is आचरण our में, duty? We have to understand that and we have to act accordingly. और यही चाहते हैं, This is what Bhagwan wants. तो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, He said, Yogastha Kuru Karmani, फिर वो समझाते हैं that be योग क्या। situated in yoga and perform your karma. Then he also explains what is yoga. संदीप जी पूछते हैं, क्या Next question, 2.54 can श्लोक verse में number बताए गए ये 2.54 श्लोक का parameters सांसारिक be कार्यों applied to judge या even कर्मयोग materialistic people संसारिक we लोगों come को across in अनुवर्तन our करने में professional लागू किया and जा सकता है, personal lives as जिनका well? सामना हमारे व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में होता है? हाँ, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया Answer, जा yes, सकता। definitely आपकी समझ can में आ जाए, apply कहीं भी those लगानी है। parameters if you actually मना understand थोड़ी करता है कि आपको यहाँ what लगानी है, Bhagavan, नहीं लगानी। the symptoms that Bhagavan will explain, then you can apply them everywhere. He's not telling just apply here or there only. ठीक है, प्रार्थना श्लोक। We'll recite the prayer verses. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः इच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।